Hello students, today we will discuss some exercise question of NCERT chapter number 2, and that is question number 3. How many neutron and proton are there in the following nuclei? So how to calculate the electron, proton and neutron? Let's check. Electrons is equals to uh, atomic number plus minus charge. Proton equals to atomic number and neutron equals to atomic mass minus atomic number. So this is how we can calculate the neutron in the question. So here it is carbon 6 and 13. So the neutron will be 13 minus 6 and it will be 7. Okay, 12 mg 24, that will be so neutron will be 24 minus 12, that will be 12 neutrons. So this is how we can calculate all the neutrons. So let's check the number of proton. Proton in carbon 6, it is 6, and proton in magnesium will be 12. So this is how we can calculate number of neutron, proton and electron in the given example. So let's move toward the question number 4. Write a complete symbol for the atom with the given atomic number and atomic mass. This is Z 17 and A 35. As you know, at atomic number 17 we have atom chlorine and atomic mass 35. And at 4 9. So at BE we will have 4 and 9. So this is how we can calculate. We can write the symbols of atoms. So first of all we will discuss the question on the basis of quantum number and filling of electrons. So let's move toward the question number 22. Which of the following are electronic species those have same number of electrons? Means electronic species are those which have same number of electrons. Na positive, K positive, so Mg2 positive, Ca2 positive, S2 negative and Ar. So let's check the electrons. Let's check the electrons in each ion. Here it is 2, 8, 1 and 1 electron will be donated. So number of electrons will be 10. It is 2, 8, 8, 1. 1 electron will be donated. Electron will be 18. Mg2 positive, it is 2, 8, 2. 2 electron will be donated. Electron will be 10. Ca2 positive, 2, 8, 8 and 2. 2 electron will be donated and electron will be total 18. S2 negative, it is 2, 8, 6. 2 electron will be accepted, so it will become 2, 8, 8 and total number of electron will be 18. In argon we have 2, 8 and 8, so the total number of electron will be 18. So argon S2 negative, Ca2 positive and K positive are isoelectronic, whereas Na positive and Mg2 positive are isoelectronic. So these are the two sets of isoelectronic species in the given examples. चलिए now question number 23 we will discuss about the electronic configuration of given species. And that is 23. H negative, it will be 1s2. For H it is 1s1 and for H negative it will be 1s2. Na positive,
1s2, 2s2, 1s2, 2s2 and 2p6. Again O2 negative, 1s2, 2s2, 2p6. F negative, 1s2, 2s2, 2p6. Total number of electrons 10, 10. So the electron configuration for 10 electrons will be 1s2, 2s2, 2p6. Next question, what are the 23 first? Second, what are the atomic numbers of element whose outermost electrons are represented by? If it is 3s1, so if we write the electronic configuration up to 3s1, then it will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So the total number of electrons 11. So the total number of electron 11. 2p3. So it will be 1s2, 2s2, 2p3. So up to 2p3 we have total number of electrons 7. Next 3p5. 3p5. So up to 3p5 we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. So up to 3p5 we have total number of electrons 70. Part third of question number 23. Part third of question number 23. Which atom are indicated by the following configurations? That is A. Helium and 2s1. Helium having 2 electron and 1 electron in 2s subshell. So total number of electron 3 and the symbol of electronic number 3 is lithium. So this is how we can calculate. Next one 24. What is the lowest value of n that allow g orbital to exist? 24. We have 4 type of orbital s, p, d, f. So if g exists, then the value of n g orbital exists, then the value of n, चलिए चेक कर लेते हैं. The value of L is equal to 1, 0, 1, 2, 3, and for 0 it is S, for 1 it is P, for 2 it is D, and for 3 it is F. If we have L is equal to 4, then it will give the information about the g orbital for the existence of g orbital. If L is equal to 4, then n must be 5 or greater than 5. Because the value of n will be 0, 2 and minus 1, and for the existence L is equal to 4, we must have the value of n is equal to 5 or greater than 5. So it will be 0, 1, 2, 3, 4. Here g orbital exists for the L is equal to 4. So this is the question number 24. So next question number 25. An atom is in one of the 3D orbital. An electron is in one of the 3D orbital with the possible value n, L, n for this electron. चलिए चेक कर लेते हैं. अगर वो 3D में, we have to calculate all the possible quantum numbers for 3D. If we have 3D, so n is equal to 3, single value of n, and the value of L must be SPD 2. L का वैल्यू 2 ही होना चाहिए. अगर 2 है तभी वो D में एग्जिस्ट करेगा. और इसके बाद m का वैल्यू, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m में भी -2, -1, 0, +1 एंड +2. इन 5 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू आप m का हो सकता है. तो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m.
चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. This was the 25. An atom of element contains 29 electron and 35 neutron. 29 electron, 26, 29 electron and 35 neutrons. 35 neutrons. Calculate the number of proton. Calculate the number of proton and the electron configuration of the element. So number of proton will be if it is alpha. Suppose the symbol of element is alpha, then 29 alpha 35. The symbol of element will be written as 29 alpha 35, and at 29 atomic number we have copper. So total number of electron is also 29 because it is not carrying any charge, positive or negative. So the electron configuration of 29 will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. ये नहीं होगा, इसकी बजाय 4s1 और 3d10 होगा. That is the exception we have discussed in the last class. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27. गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिस. यू कैन कैलकुलेट. इट इज द इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M? चेक कर लेते हैं. L का पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है और M का पॉसिबल वैल्यू कितना. क्वेश्चन नंबर 28. First, an atomic orbital has n = 3, then L may be 0, 1 and 2. So these are the three possible values of L, and total possible values of M will be n square. It may be 3 square and 9. We can check. For L = 0, M will be 0. For L = 1, M will be -1, 0 and +1. For L = 2, M will be -2, -1, 0, +1 and +2. So these are the total possible values of M, and the number of total possible values of M is equal to 9 values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. चलिए, क्वेश्चन नंबर 29. यूजिंग SPT notations, describe the orbital with the following quantum number. With the following quantum number. So n = 1 and L = 0. So it is 1s. 1s क्योंकि L का 0 वैल्यू किसके लिए होता है? S सबशेल के लिए होता है. n = 3, L = 1. So it will be 3p. L का 1 वैल्यू होता है 3, p के लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए होता है. So this is how you can calculate the part C and D of question number 29. So let's move toward the question number 30. Question number 30. चेक कर लेते हैं 30 में क्या होगा. Question number 30. I am taking the part B of 30. Explain giving reason which of the following set quantum number are not possible. ये तो सारे ही चेक करने पड़ेंगे. चलिए चेक कर लेते हैं. n = 0 नहीं हो सकता, ये यहीं पर गलत हो गया. अगेन फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट n = 1 हो सकता है. L = 0 भी हो सकता है. फिर से m = भी 0 हो सकता है. और m = ms. This is the spin quantum number. You can denote it by s also. -half. चलिए चेक करते क्या हो सकता है. n = 1, then L will be n minus L will be 0 to n minus 1. It is 0. Correct है. Confirm. M single orbital will be exist for 0 as m = 0. So m = 0 is also correct. And s = half. अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए हाफ हो सकता है. ये भी आपका करेक्ट है. तो सेकंड ऑप्शन कैन एग्जिस्ट. अगेन n = 1 थर्ड ऑप्शन.
third part, if n is equals to 1, then L is equals to 1 cannot be exist because the value of L will be 0 to n minus 1 and it will be 0 for n is equals to 1. So ये थर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा. चलिए पार्ट नंबर 4, n is equals to 2 and L is equals to 0 1. L is equals to 1 दिया है, एग्जिस्ट कर सकता है, अभी तक ठीक है. And if L is equals to 1, then M will be -1 0 and +1. So M का 0 वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है. M की 3 वैल्यू होंगी टोटल पॉसिबल और M का 0 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी सही है. और इसके लिए -12 भी एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन फिर होगा. जब एक इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर जाता है तो वहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे. चलिए बाकी आप इसी तरीके से चेक कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस. सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 31. Question number 31. How many electrons in an atom may have the following quantum number? Question number 31. Following quantum number A. N is equals to 4 and ms, or you can say spin quantum number S minus R. चलिए n is equals to 4. If we have n is equals to 4, then n may be 0 1 2 3 0 1 2 3 and total ऑर्बिटल्स जो बॉक्स बनते हैं आपके, जिनको आप ऑर्बिटल बोलते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल्स टू द टोटल ऑर्बिटल. सो टोटल ऑर्बिटल विल बी द टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m and the total possible value of m is equals to n square and it will be 4 square and it will be 16. So total 16 orbital will exist. 16 ऑर्बिटल एग्जिस्ट अगर करते हैं तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ दोनों होता है. सो द इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग माइनस हाफ विल बी 16. एक बार एग्जांपल देख सकते हैं आप इसका. इफ वी हैव 3 ऑर्बिटल्स मींस 3 वैल्यूज ऑफ m, देन माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ minus half means electron having minus half value of spin quantum number will be equals to the total number of orbital exists and the total number of orbital exists equals to the total possible value of m and that is n square 16. आपको बार बार इसके लिए 1 3 5 7 ऐसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n स्क्वायर से कर सकते हैं. चलिए let's take the question number 62. Question number 62. The quantum number of such electrons are given below. Arrange them in the order of increasing energy if any of these combination have the same energy list. अगर इनका सेम एनर्जी है तो लिस्ट करते हैं. चलिए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं. If we want to arrange them in an increasing order of energy level, then we have to calculate the exact subshell, whether it is 3p, 2s or 4p, and according to above we can according to above principle we can arrange them into the increasing order of energy. So for question number 62, first n is equals to 4, l is equals to 2 and m is equals to -2 and ms spin quantum is equals to -half. चलिए चेक कर लेते हैं. n is equals to 4 L is equals to 2 0 1 2 SPB, it is B. M is equals to -2. If we are having -2, if we are having -2 -1 0 +1 and +2, so we have 5 orbitals.
we have 5 orbitals and -2 value this one, और इसमें हमको डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना बिकॉज ऑफ इट इज हैविंग -12 value of spin quantum number, so we have to fill upward electron, all the upward electron first, 5 6, so it is 6 electrons and then it is 4d6. So this is how we will calculate the configuration, particular configuration of each electron. This is first. Second n is equals to 3, n is equals to 2, n is equals to 1 and n is equals to plus half. For n is equals to 3 it is third shell, for l is equals to 2 it is d shell, and if we have l is equals to 2 then we have 5 orbital from -1 to -2 2 plus 2 -2 -1 0 plus 1 plus 2, ठीक है, and m is equals to plus 1, so this is the fourth number of orbital and plus half value of electron, so 1 2 3 4, so this is the fourth electron which will be filled in 3d subshell having m is equals to 1 and spin quantum number value plus half, so it will be 3 3 4. Again third n is equals to 4, l is equals to 1, n is equals to 0 and ms is equals to plus half. I am calculating it directly. 4sp 4p 3 orbital value 0 plus half 2 electron 4p2. Again example number 4, n is equals to 3, so 3, l is equals to 2, so d having 5 orbital -2 and minus half, it will be 6, 3d6. चलिए fifth part n is equals to 3, so 3, l is equals to 1, so p and m is equals to -1 first orbital and plus half, so it will be 3p1. Sixth n is equals to 4, l is equals to 1, so p and m is equals to 0 because of l having 1, so m is equals to 0, second orbital plus half second electron, so it is the total representation of each orbital. And now we have to arrange these 6 configurations into their increasing order of energy level. चलिए चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लोएस्ट सेल कौन सा है? 3, और 3 में SPD, तो 3p सबसे पहले फिल होता है. 3p1 and after that, after the 3p we have to fill 3p4s जो यहाँ नहीं एब्सेंट है. इसके बाद 4d आएगा, सॉरी 3d आना था, 4s के बाद 3d आना था, 3d भी नहीं है. 3d के बाद है 3d है, दिस इज 1 3d, 4s एब्सेंट है, दोबारा कर लेते हैं. थर्ड सेल और फोर्थ सेल कर लेते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d 4p and 4d. This is the increasing order of orbitals. 3s absent है, 3p ये रहा 3p1 ये हमारे पास है, 4s absent है, 3d6 हमारे पास है, 3d अगेन 4p हमारे पास 2 टाइम है, 4p 2 and 4p2 सेम है, दोनों एक ही टाइम है. थर्ड एंड फिफ्थ सेम है, so 4p2 and after that 4d will be filled 4d6. So here it is 3p1 3d6 4p2 and 4d6, two type of set of quantum number having same energy level, that is 3 and 5. 3 and 5 having same energy level. So this is how we can arrange orbitals with the help of quantum number in their increasing order of energy.
That was the question number 62. Again question number 63, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 63. Question number 63. The bromine atom possesses 35 electron. Bromine 35 electron. It contains 6 electron in 2p shell. 2p6. 6 electron in 3p. 3p6. 5 electron in 4p. 4p5. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. चलिए चेक कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किसके पास लगता है. 35 का सबसे पहले हम नंबर 35 का हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज Br35 एंड इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p5. This is the complete electronic configuration of atomic number 35 bromine. So let's check the effective nuclear charge. What is the effective nuclear charge? First of all, effective nuclear charge. This is the you can understand this concept according that this is the nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell, and we have 3 examples: 2p6, 3p6 and 4p5. So 2p6 will be exist here, 2p6, 3p6 will be exist here, 3p6, and 4p5 will be exist in the fourth shell, 4p5. So the attraction between the electron and nucleus is called the effective nuclear charge, and the electron which is present far away from the nucleus will be at the lowest effective nuclear charge, क्योंकि उसके ऊपर attraction nucleus दूर है, distance ज़्यादा है, इसलिए नहीं लगा पाएगा. So 4p5 electrons will be at the lowest effective nuclear charge in the given orbitals. चलिए question number 64. Question number 64. Among the following pair of orbital, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? इन पेयर में से 2s और 3s, 4d 4s, 3d 3p. चलिए चेक कर लेते हैं 2s 3s. इसका बहुत एक अच्छा 2s एंड 3s, इसका बहुत एक अच्छा हमने आपको एग्जांपल बताया था n+l रूल. n+l रूल के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्बिटल पहले फिल होगा वो ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, क्योंकि पहले फिल हो रहा है, और जब पास होगा न्यूक्लियस के on the following pair of orbital, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, here 2s energy of 2s is less than that of the 3s, means it is near to the nucleus and it will be a greater effective nuclear charge, larger effective nuclear charge. Again in second 4d and 4f. So 4d having less the energy level than 4f, so 4d will experience effective nuclear charge highest. 3d and 3p, third one 3d and 3p. Here 3p having less energy level than 3d, so 3p will be a larger effective nuclear charge. Question number 65. The unpaired electron in aluminum and silicon are present in 3p orbitals. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? The unpaired electron in aluminum and silicon are present in 3p orbital. चलिए चेक कर लेते हैं. Aluminium 13, 1s2 2s2 2p6 3s2
and 3p1. For silicon, for same atomic number, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. The distance from the nucleus of 3p subshell is equal, दोनों का इक्वल है. अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा. अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बियर करेगा. दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, और थर्ड में एस पी एंड डी, तो 3p1 एंड 3p2 दो केस हुआ. अब 3p1 के लिए न्यूक्लियस के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? इट इज 13 प्रोटॉन, बट फॉर 3p2 इट हैज 14 प्रोटॉन. अगर दो एग्जांपल मिले गए हैं तो 3p1 के लिए न्यूक्लियस के पास 13 प्रोटॉन है, 3p2 के लिए 14 प्रोटॉन है. डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस तो कैंसिल हो गया, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. अब वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन. सो here we have 14 proton, that is greater than in case of that is greater than as compared to aluminium in 3p2 in the example of silicon. So 3p2 electron will be more attracted toward the nucleus. तो जो 3p वाला है, 3p2 जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और जो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम. हेंस 3p2 electron will bear maximum or highest or larger effective nuclear charge. So this was the question number 65. So let's check the question number 66 and 67. Question number 66. Indicate the number of unpaired electron P. Very easy. Phosphorus, silicon, chromium, iron, krypton. So we have to write the electron configuration of 15, and that is neon, and 3s2, 3p3, and 3s2, for 3s2 we have fully filled S, and for 3p3 we have half filled of 3p. So here are total unpaired electron are 3. So this is how you can calculate for each one. You can calculate unpaired electron for each atom. Question number 67. How many subsets are associated with n is equal to 4? First question. N is equal to 4. The total possible values of n 0, 1, 2 and 3. So total subcell S, P, D and F. So we check कर लेते हैं. How many electron will be present? In the subshell having ms value minus r for n is equal to 4. ms value स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू किया है माइनस r, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. अभी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग same spin quantum number will be equal to the total orbital exists for n is equal to something. In this example it is 4. So the total number of orbital will be equal to the total possible values of m, and total possible values of m will be n square, and that will be whole square. So 16 orbital will be present, and 16 electrons will be present having the value minus r. So this is the calculation on the basis of quantum number in the exercise. So today we have discussed many questions, and I have left some questions for you. That is the exercise for you. और इसी के साथ आपको बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपको ट्राई करते रहना है. कल हम स्टार्ट करते हैं आपका जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे, या फिर आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर है, और एक इफेक्ट और कल समझा देंगे आपको, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will be discussed in the next classes.
सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, घर पे नोट्स बनाते रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।